आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीन बाय अज्यूम मीन मेथड एंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. So let we start with first, which is assumed mean method. It is also known as shift of origin. मतलब एग्जाम में या तो assume mean method बोला होगा या तो shift of origin method बोला होगा, दोनों का मतलब एक ही है. So in this assume mean method, we have to use two formula. The first formula is d bar is equal to sigma fi di upon sigma fi. The second formula, which is for mean, x bar is equal to a plus d bar. इसमें जो टर्म्स यूज हुआ है उसका क्या मतलब है, that will discuss in question. So in assume mean method, we prepare a table of 5 column. In first column we'll write on class interval. In second column we'll write on class mark. In third column we write an extra value, that is di is equal to xi minus a. In the fourth column we'll write on frequency, and in fifth column we'll write on fi into di. So these are the 5 requirement. डायरेक्ट मेथड में हमने सिर्फ 4 कॉलम बनाए थे, यहाँ पे हम 5 कॉलम बना रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन is the measurement in mm of the diameter of a head of a screw are given below, and we have to find out mean by direct method. We have to find out mean by assume mean method. So diameters are given, which are our class interval, and their frequency which given, which is in terms of number of screws. So as we discussed, whenever we are solving sum by assume mean method, we are preparing a table of 5 columns. In first column we'll write down diameter in mm, and in third column we'll write down number of screws, which are our frequency. तो diameter in mm, which is our class interval, हमने as it is copy कर लिया, and number of screws, which are our frequency, वो हमने as it is copy कर लिया. Now I'll start with the next. So we are finding value of h, and that value of h we are finding by using difference between two consecutive lower limit. पहले वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 33, दूसरे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 36. दोनों को माइनस किया तो हमें मिल रहा है आंसर 3. Now we will find out class mark. So we use a formula of class mark, which is lower limit plus upper limit upon 2. So it becomes 33 plus 35, which is 68 divided by 2, that become 34. अब हम क्लास मार्क का फॉर्मूला फिर से यूज नहीं करेंगे. नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ h, which is width of the class, वो हम 34 के साथ ऐड कर लेंगे, become 37. 37 plus 3 become 40 for next class mark. 40 plus 3 become 43, and 43 plus 3 become 46. So this become your value of class mark. Now we have to find out a term called as assumed mean. So you can select any value. We prefer a middle value from a column of class mark. Be careful, class mark के कॉलम में से ही a का वैल्यू सिलेक्ट करना है. a का मतलब होता है assumed mean. So a we are considering as 40. So now we are updating the answers. a का वैल्यू मिल गया, तो नाउ नेक्स्ट कॉलम इज di इज इक्वल टू xi माइनस a. हमारे पास xi का वैल्यू है, हर एक xi में से a को माइनस करना है. सो द फर्स्ट वैल्यू इज 34, में से माइनस करेंगे 40 को, सो दैट गिव्स यू -6. द नेक्स्ट वन इज, we'll write on the next value as 37 minus 40 is -3, then 40 minus 40 gives you 0. 43 minus 40 gives you 3, and 46 minus 40 gives you 6. So instead of doing this, you can write like this. जो a दिख रहा है उसके सामने exactly 0 लिखना है, और उसके ऊपर और नीचे जो h का वैल्यू है उसका टेबल लिखना है. h का वैल्यू 3 है तो हम 0 के नीचे 3 का टेबल, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 0 के अबव भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट 0 के ऊपर नेगेटिव वैल्यू और 0 के बिलो पॉजिटिव वैल्यू. सो बाय दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ डी आई. नाउ हमारे पास डी आई आ गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पहले से ही अवेलेबल है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई एफ आई विथ डी आई. So first value gives you minus 60, second value minus 57, next value 0, next value 63, next value is 162. Now in next step we are finding total of frequency, and as we obtained it is 100, and then next one will find out total, that is sigma fi di, last column का total. So there are some negative value and there are some positive value. तो पहले हम सब नेगेटिव वाले को साथ में ऐड कर लेंगे विच गिव्स यू माइनस 117, और सब पॉजिटिव वाले को हम साथ में ऐड कर लेंगे विच गिव्स यू 225. सो ओवरऑल सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू वी ऑब्टेन्ड एज 108. सो हमारे पास सिग्मा एफ आई का वैल्यू अवेलेबल हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू अवेलेबल हो गया. Now we'll start with the first formula. So as we know, d bar is equal to sigma of fi di upon sigma of fi. So sigma of fi di का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, that is 108 upon sigma fi का वैल्यू है 100. So if we simplify that gives you 1.08. But ये d bar का वैल्यू है, we have to find out value of mean, and mean denoted by x bar. So x bar is equal to a plus d bar, where a का value we assumed as 40 plus d bar का value we have as 1.08. Overall answer we are getting 41.08. So the mean diameter of a head of screw is 41.08 mm. So what is assumed mean method का मतलब, assumed mean method में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू हम इमेजिन करते हैं, उस इमेजिनेशन वाले वैल्यू को हम बोलते हैं assumed mean. और by using this formula of d bar and x bar we are finding exact mean of our question. You can take value of assumed mean as the first value of class mark or the last value of class mark, or you can take any value, but to solve sum comfortably and easily we are preferring the middle value of a class mark. So this is what the first question of assumed mean method. ये जो question मैंने लिया है from the old टेक्स्ट बुक of 10th standard, and it is question number 3, इसलिए आपको question number 3 visible हो रहा है. Moving further, one more question will of same type, जिसमें आपको फाइंड करना है given below the frequency distribution of a marks out of 100 as follow. So marks given, आपको कैलकुलेट करना है mean by assumed mean method. So we prepare a column. In a first column we'll write on marks as it is, and in third column we'll write on number of student, which is frequency. Now we will find out width of the class, h का value, that is difference between two consecutive lower limit. तो फर्स्ट वाले क्लास का लोअर लिमिट है 0, सेकेंड वाले क्लास का लोअर लिमिट है 10. वी सब्ट्रैक्ट गिव्स यू वैल्यू एज 10. तो हमने h का वैल्यू एज इट इज लिख लिया, width of the class is 10. So moving on next, now we'll write on class mark. We know formula of class mark, lower limit plus upper limit upon 2. So first class के लिए आंसर हो गया 0 plus 10 upon 2, which is 5. Now we are not applying formula of class mark, we have a shortcut. 5 के साथ जो h का वैल्यू हमने फाइंड किया उसको ऐड कर देंगे, become 15. 15 plus h का वैल्यू 10, 25 plus 10, 35 plus 10, 45 plus 10, 55 plus 10, 65 plus 10, 75 plus 10, 85 and plus 10 become 95. Now again we'll take find out value of assumed mean. Here we have middle value as, कभी कभी दो वैल्यू मिडल में होगी, अगर आप चेक करेंगे तो you can take any one as a value of a. Here two values are 45 and 55. You can consider any one as value of a. Here we are considering a का value as 55, so we update assume mean का value है 55. So now we are finding di is equal to xi minus a. So what we prefer, a का value update कर दिया हमने 5 minus 55, which gives you minus 50, then minus 40, then minus
30 minus 20 minus 10 0 10 20 30 40। सो जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, ए के सामने 0 लिखना है, 0 के नीचे जो h का वैल्यू है उसका टेबल, h का वैल्यू 10 था तो a के सामने हमने 0 लिखा, जो जहाँ पे हमने a का वैल्यू अज्यूम किया है 55 वाले रो में हम 0 लिख देंगे और उसके नीचे 10 का टेबल, 10 20 30 40, उसके 0 के अबव भी 10 का टेबल विच इज़ -10 -20 -30 -40 -50, above 0 negative, below 0 positive. Now we'll find out value of fi into di, frequency का वैल्यू अवेलेबल है, di का वैल्यू अवेलेबल है। Now we'll multiply 3 into -50 -150, next is -200, next is -210 -200 -120 0 120 120 60 and 320. Now we have to find the total of frequency, and if you add total of frequency gives you 80, and the total of last column FID hai, so again there are some negative whose answer is -880 if you add, and there are some positive whose answer is 620, so overall subtraction gives you -260. so जो दो वैल्यू का ज़रूरत था वो हमें मिल गया है. Let me apply a formula of d bar is equal to sigma fi di upon sigma fi, which is equal to -260 divided by 80. So simplifying this gives you -3.25. So now we're done with the value of d bar, but we are interested in value of x bar, which is mean. So x bar is equal to a plus d bar. A का value what we assumed as 55 plus value of d bar as minus of 3.25. We'll subtract, gives you 51.75, which is what the value of mean. So mean marks obtained by a student is 51.75 marks, which is your final answer. So these are the two questions related with assumed mean method. So simple calculation based थोड़े formula हैं, daily basis पे आपको revise करना है. Let method, and the name of the next method, third method, is step deviation method, or also known as shift of origin and scale method. So be careful, assume mean method में भी shift of origin था, but वो shift of origin method था, यहाँ पे shift of origin and scale method है. So again we have to use two formula. One is u bar is equal to sigma fi ui upon sigma fi, x bar is equal to a plus h into u bar. Here we have to prepare 6 column. In first method we prepare 4 column, in second method we prepare 5 column, and in this third method we prepare 6 column. First column is classes, which is class interval. Second column is class mark. Third column is di is equal to xi minus a. This 3 column is same as the previous one. यहाँ पे एक extra column add हो रहा है, which is ui is equal to di upon h. किसी ने पूछा ui क्या है, तो you can tell them scaling factor. ui is a scaling factor. वैल्यू को छोटा करने के लिए हम लोग ये ui का फॉर्मूला यूज करते हैं. Next one is a frequency, and the last one is fi into ui. So these are the 6 column required whenever we are solving sum by step deviation method. फॉर्मूला याद हुए बिना ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको, and one of the important chapter of algebra. The question is, following table gives frequency distribution of tree planted by different housing societies in a particular locality. So this is the data which is given to us, number of trees and number of societies. We have to find out mean by step deviation method. So let we start. We require 6 column. फर्स्ट कॉलम में हम नंबर ऑफ ट्रीज लिख रहे हैं, थर्ड कॉलम में हम नंबर ऑफ सोसाइटी लिख रहे हैं विच इज़ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड कॉलम हमने क्लास मार्क के लिए रखा है. नाउ वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एच, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट. पहले वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 10 है, सेकेंड वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 15 है. आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट गिव्स यू वैल्यू एज 5. सो विड्थ ऑफ द क्लास हमें 5 मिल गया. नाउ वी आर फाइंडिंग क्लास मार्क.
Formula of class mark is lower limit plus upper limit upon 2. 10 plus 15, 25 divided by 2 gives you 12.5. आप बार बार फॉर्मूला चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बट सिंस वी हैव अ शॉर्टकट, जो 12.5 मिला उसमें h का वैल्यू ऐड करेंगे, बिकम 17.5 plus 5 which is value of h gives you next value which is 27.5. then next value is 32.5 and 37.5. now again we'll find out value of a which is assume mean. तो दो वैल्यू है, एक 22.5 है और एक 27.5 है जो मिडल में. we consider as 22.5 as value of a, so we update as assume mean का वैल्यू मिला 22.5. now we apply formula of di is equal to xi minus a का वैल्यू we have as minus 22.5. so subtract करेंगे xi में से minus 10, minus 5, 0, 5, 10, 15. follow the shortcut which we prefer, that is a का वैल्यू जहाँ अज्यूम किया उसके सामने वाले रो में आपको 0 लिखना है, उसके नीचे टेबल ऑफ h which is value of 5, 5 into 10, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, and above 0 also negative number of negative table of h which is minus 5 and minus 10. now in the new column which we have as ui is equal to di upon h. तो जो di का वैल्यू हमें मिल रहा है उसको h से डिवाइड करना है. सो di का फर्स्ट वैल्यू है minus 10, उसको h का वैल्यू है 5, उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज minus 2, minus 1, नेक्स्ट वैल्यू इज 0, नेक्स्ट वैल्यू इज 1, नेक्स्ट वैल्यू इज 2 and next value is 3. so this is what the value of ui we get. now we multiply fi frequency with ui. be careful, frequency को ui के साथ multiply करना है. so the first frequency is 2 and the first ui is minus 2 gives you minus 4, next gives you minus 7, next gives you 0, next gives you 8, next gives you 12, and the last column gives you again 12. now we want total of frequency which is 36 and total of fi ui we obtained by all negative together and all positive together. answer we are getting as 21. so starting with the formula, u bar is equal to sigma fi ui upon sigma fi. 21 divided by 36, first if you want you can reduce by 3 and then simplify. so we are getting answer as 0.583 which is value of u bar, but अपने को u bar नहीं चाहिए, we have to find out value of x bar. so x bar is equal to a plus h into u bar. so a का वैल्यू हम लोग ने अज्यूम किया था 22.5 plus h का वैल्यू we have as 5 multiply by 0.583. so 0.583 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वी आर गेटिंग एज 22.5 plus 2.92. overall answer is 25.42. this become your value of mean. so mean number of trees planted by a society is 25.42 trees. so this is what the question of step deviation method. first method direct method में 4 कॉलम थे which is number of which is class interval, class mark, frequency and fi into xi. फिर हमने step deviation पढ़ा, उसमें 5 कॉलम थे, class interval, class mark, frequency, di is equal to xi minus a, and the last column is fi into di. and this is what the third method we are dealing, जिसमें 6 कॉलम है, class interval, class mark, frequency, di, then ui, and the last one is fi into ui. so don't forget to write down final answer also. Let's discuss one more. this is from the revised textbook, the question number 6 from the exercise 6.1. following table gives frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company. find mean of weekly wages by step deviation method. this is what the data given, we have to find out mean of weekly wages. weekly wages मतलब daily basis payment जो workers को मिलता है वो. so let we start with 6 column. first column में हम लिखने वाले हैं weekly wages which is class interval. then we are finding class mark. so we know class mark के लिए we have to apply a formula, lower limit
प्लस अपर लिमिट। तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 1000, सेकेंड वाले फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 1000, अपर लिमिट है 2000, ऐड करेंगे आप, that gives you value of 1500. Then we'll find out value of h, which difference between two consecutive lower limit. तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 1000, सेकेंड वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 2000। आप अगर चेक कर रहे हैं तो हम एरो से हाईलाइट कर रहे हैं। So width of the class we obtained as 1000. Now we are not applying again value formula of class mark. We add first class mark, which is 1500 with 1000 gives you 2500, plus 1000 gives you 3500, plus 1000 gives you 4500. So this is what the value of value of class mark we obtained. क्लास मार्क का मतलब मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसके बीच का कौन सा वैल्यू है वो होता है क्लास मार्क। नाउ वी विल राइट ऑन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। सो एक्स आई माइनस ए के लिए ए का वैल्यू चाहिए, सो वी सिलेक्ट एनी वैल्यू from a class mark, but we prefer a middle value, and here we are considering value of a as 3500. so a लिख दिया हमने। so as we discuss एक्स आई माइनस है तो फर्स्ट वैल्यू बिकम माइनस 2000, एक्स आई का पहला वैल्यू है सॉरी माइनस 500, देन नेक्स्ट वैल्यू इज sorry again the value of di is first value is minus 200, then minus 2000, then minus 1000, then 0, then next value is 1000. so this is what the value of di we obtained. again di is equal to xi minus a, xi का वैल्यू है 1500 माइनस a का वैल्यू हमने अज्यूम किया 3500 मतलब 3500। व्हेन वी सिंप्लीफाई वी ऑब्टेन दिस आंसर। हमने एक शॉर्टकट भी डिस्कस किया है, ए के सामने जो वैल्यू है वहाँ पे 0 लिखना है, उसके ऊपर जो एच का टेबल है वो एच का वैल्यू है 1000। सो एच का वैल्यू 1000 का टेबल हम लिखेंगे 1000 इंटू 1000 इंटू 2 इज 2000 which is above 0 negative value, below 0 positive value. now we will write on ui is equal to di upon h। तो जो डी आई का वैल्यू आया है उसको एच के वैल्यू से डिवाइड करना है। सो माइनस 2000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, गिव्स यू माइनस 2, देन नेक्स्ट गिव्स यू माइनस 1, नेक्स्ट गिव्स यू 0 एंड नेक्स्ट गिव्स यू 1। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ यू आई। नाउ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज नंबर ऑफ वर्कर ऑलरेडी गिवन टू अस इन क्वेश्चन, तो हमने कॉपी कर लिया है। सो नाउ विल मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विथ यू आई। सो फर्स्ट वैल्यू गिव्स यू माइनस 50, next value minus 45, then next value 0, then next value 30. now we'll find out total frequency which is 150. now अब find करना है हमें total of fi into ui, मतलब sigma of fi into ui। so there are some negative, तो negative का addition है minus 95 and positive value है 30, so when we simplify that gives you minus 65। so now we have all the values ready with us. applying formula of u bar is equal to sigma fi ui upon sigma fi। so sigma fi ui का वैल्यू था minus 65 divided by 150, so that gives you answer as minus 0.4333। here we are finding answer till 5 digits since value of h which we are using for next formula is 1000, or you can find out till 3 or 4 digit। so x bar is equal to a plus h into u bar। a का वैल्यू है हमारे पास 3500 प्लस h का वैल्यू है 1000 माइनस 0.043333। when you simplify that gives you answer as 3066.67, which is the exact answer or approximate answer. you can write down 3067, no issue of it। so the mean value of mean wages of worker is 3066.67 rupees, which is our final answer। so these are the two questions are of step deviation method। अब डाउट ये होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है जब कुछ भी नहीं दिया होगा।
So whenever the numbers are small, like between 0 to 15 or 20, you can use direct method if method is not specified. If the number till 100, you can use assume mean method. And if the numbers are greater than 100, then you can use step deviation method, जिससे calculation easy हो जाता है. So these are the three method of mean. um, this is what the practice question from the textbook 6.1. You have to solve question number 2 4, which is by assume mean method, and question number 5 6 by step deviation method. So with this lecture, we're done with the first concept of statistics, which is mean, in which we discussed three methods. So revise it and complete this practice questions. We'll meet in next lecture and we'll start with median.